sample and I need blood transfusion. Because if you forget this blood transfusion step, no, you can land into problem. Time waste. Whatever, child may have head injury, may have abdominal injury, may have chest injury, but immediate priority that he should not die of hemorrhagic shock. So this giving of normal saline will give you time. Yes, sir, 15 to. So giving of normal saline will give you time. ठीक है, but ultimately blood takes time. So your second priority will be to arrange for blood transfusion by taking the sample for blood grouping and cross matching and alerting the blood bank that I need this much. I have a child with trauma and I need blood. See, he may have anything, hemorrhage, perforation, this, but first priority is to take care of hemorrhagic shock. So, see, he will not be taken unless his hemorrhagic shock is taken care of in time. No other treatment can be effective. See, fast and CT and all, this is later on, because he is in a danger of dying hemorrhagic shock. Okay, sir. तो फर्स्ट जहाँ हेमोरेजिक शॉक होता होगा, जहाँ ब्लड ट्रांसफ्यूजन का जरूरत पड़ता होगा, तो वहाँ तो जीसीएस स्कोर भी कम हो जाता होगा ना सर? कि मतलब ऐसा होता है कि अगर मतलब जीसीएस स्कोर 12 हो और हाँ क्यों नहीं, ये 12 है तो कम ना. See, we are not saying he is having head injury or not having a head injury, but see, hemorrhagic shock is the first priority, whatever may be the feature. So he cannot be opened directly. वो तो mortality बढ़ जाएगी ना, unless आप इसकी hemorrhagic shock को नहीं करेंगे. क्योंकि उसका आप ये देखो बीपी में तो करीब ठीक है इसका, but his heart rate is increased, tachypnea है, tachycardia है, capillary filling time is increased. So then third step will be neurosurgery and surgical consultation, CT thorax, CT abdomen and CT head. That is how you will proceed with your reply. So it is clear to you now? Yes, sir. Yes. The third thing will be, once you have put a normal saline drip, once you have done a secondary assessment, once you arrange blood, then will be your step to call for help and other radiology imaging. So many of these children have died in radiology center. They may die of obstruction. Suppose there is some laryngeal obstruction, so priority will be to have a patent airway. So that sort of thing is to be taken care of. So is it clear now? Any questions? Yes, sir. No. No, sir. अच्छा, और एक इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि कभी भी मल्टी ट्रॉमा में सर्वाइकल नेक इंजरी शुड नॉट बी फॉरगॉटन, बिकॉज unless you can rule it out, you have to put cervical collar to all patients, because this missing of this can result into from a minor spinal trauma to major trauma. Suppose maybe it may be a partial spinal injury, so it may go into a complete cervical injury. So then he will be crippled for life with quadriparesis. So never forget in a trauma to put a cervical collar unless the cervical spine injury is ruled out. This is very important. And then in cervical spine injury, you don't do head tilt and jaw lift. Yes, sir. So you do jaw thrust. So head tilt maneuver is not done. Yes, sir. So सर सर्वाइकल इंजरी को कैसे रूल आउट करते हैं सर? एक्सरे ऑफ नेक के देखो, एक्सरे भी नेक को ये नहीं है कि इमीडिएटली आप नेक के लिए भेज दो और वो हेमरेज से मर जाए. So
तो आप देखो रूल आउट कौन करेगा, न्यूरोसर्जन करेगा या एमआरआई होगा वो करेगा। आपका काम इतना है कि उसको आप सर्वाइकल कॉलर लगा देंगे and you will keep in the central position till that time. दोनों तरफ सैंड बैग लगा सकते हैं हेड के दोनों तरफ, and the ideal management is to put a cervical collar of adequate size. तो ये कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो ट्रोमा में आप कभी भी स्पाइन इंजरी मत भूलिए, because the problem is that a minor injury can be converted to a major injury. Yes, sir. So maybe it is unstable. See, there is a minor injury and the cervical vertebra are unstable, and because of the movement of the vertebra, it results into full neck trauma or full spinal damage. So you know that cervical spine may result into quadriparesis. So that's the. Matlab, in case of trauma, you always take care of spine injury. Unless otherwise ruled out. Ruling out, see, एक तो ये इसका आपने पूछा कि हाउ विल यू सस्पेक्ट, तो सस्पेक्ट का ये है कि अगर उसको टेंडरनेस है स्पाइन पे, दूसरा पेन है, तीसरा कोई स्वेलिंग है, बट एनी ऑफ दिस थिंग कैन बी नेगेटिव. सो अनलेस एमआरआई और अनलेस न्यूरोसर्जन से you assume that every child has got a multiple trauma, has got a spine injury, and you manage like this. And the best way is to put a cervical collar. Sir, I want to ask one thing, sir. Yes. Sir, what will you suppose the child had got an open fracture and otherwise no other injury, and child would have been in hypotension or like shock. To achieve hemostasis in that apart from the other like tonic and all, how do we achieve hemostasis in that? Adults में तो जैसे 1 liter 1.5 liter RLNS दे करके ट्राइनेक्सा 1 ग्राम दे देते हैं, बच्चों में कैसे करना होता है hemostasis अचीव सर? नहीं मैं आपका क्वेश्चन ये है कि उसको ऑनगोइंग ब्लीडिंग हो रही है, ऑनगोइंग ब्लीडिंग हो रही हो और बच्चा शॉक में हो. नहीं शॉक में है और उसको ऑनगोइंग ब्लीडिंग हो रही है, ये आप कह रहे हो? जी सर. देखो हेड में तो ये क्लियर कट है कि इमीडिएट सूचर विल स्टॉप द ब्लीडिंग. यस सर. अगर वो स्कैल्प इंजरी है ना, लेसरेटेड वुंड है. यस सर. लेसरेटेड वुंड है तो ये बिकॉज द स्किन इज वेरी टाइटली बाउंड टू द स्कल, सो इमीडिएटली द हेड जो स्कैल्प ब्लीडिंग है वो स्टिच लगाते ही बंद हो जाती है. जी सर. तो इमीडिएट स्टिचिंग यू कैन डू और दी हेड, ठीक है. और बाकी जो जगह है तो see tourniquet is not advised. What is advised is pressure, शायद बच जाता. यस सर. दूसरा साइट ऑफ ब्लीडिंग के हिसाब से ना, वो आप अगर यू कैन हैव एन आइडिया कि विच आर्टरी इज देयर, तो जैसे पैर में हो रही है तो फिमोरल पे आप प्रेस करेंगे तो उससे वो ब्लीडिंग बंद हो सकती है. तो दिस इज ए डिटेल विच इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू. ये सर्जिकल क्वेश्चन जाता है. आपका काम ये है कि हेमरेजिक शॉक है तो ब्लड अरेंज करना और तब तक सलाइन देना एंड देन सर्जिकल कंसल्टेशन. ओके सर. यस. ये स्लाइड चेंज नहीं हुई क्या? आप बताइए इसका. यस. A 6 years old boy presented to the emergency department with a 2 days history of the high grade fever, a vomiting, lethargy. On examinations, he is lethargy with cold extremity, poor peripheral pulses, prolonged CRT. His blood pressure 75 by 45 mmHg. Heart rate is 150. Respiratory rate is 40, SpO2 89 on room air. What will be your initial assessment and management plan? Sir, as the symptoms given, कि child is lethargic, cold extremity, poor peripheral pulse,
and BP is also low. BP should be 82 in that case. So it is in the shock. As the fever is there, so we can consider it is a septic shock, sir. So in that conditions, So first wait, 1 minute. So this will be a hypotensive septic shock. yes, sir, hypotensive septic shocks. Yes. Okay. BP is also. So first, as the SpO2 is low, so first we give oxygen. First we give airway breathing circulation. We will